Hallo Nils, hier ist Mama. Okay, you can check. Hallo Nils, hier ist Mama. Wann du denn am Mittwoch in Münster? Münster कब आ रहा है? Uncommon. So wann kommst du? Also das heißt ST. Wann kommst du dann am Mittwoch in Münster an? Uncommon. Maybe Mama is waiting for the son. बेटा कब आ रहे हो? Münster. Münster ist eigentlich eine schöne Stadt in Norddeutschland. थोड़ा नॉर्थ से वेस्ट की तरफ थोड़ा सा हॉलैंड जाते हैं तो उसके नाटक कहीं ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे. So Münster ist eine schöne Stadt und da wohnen vielleicht 250.000 Menschen. 2.5 लाख लोग हैं और शायद 5 लाख साइकिल्स हैं. पर हेड 2 साइकिल हैं लोगों के पास. पर हेड 2 साइकिल है मतलब दीवाना है ये सिटी. साइकिल वाला शहर बोलते हैं इसको. स्टूडेंट्स रहते हैं खूब सारे एंड alles eigentlich Ampel und alles ist die Radfahrer जैसे बाकायदा ट्रैफिक लाइट के रूल रहते हैं. बहुत सारी सड़कें वहाँ पे ऐसी हैं जिसमें कार अलाउ नहीं है, केवल साइकिल चलेगी. तो साइकिल प्रेमी रहते हैं इसमें. 2.5 लाख की आबादी पे 5 लाख साइकिल है. इंटरेस्टिंग. Hi Mama, ich komme am Mittwoch mit dem ICE Intercity Express. Der Zug fährt. Der Zug fährt um 15:44 Uhr in Bonn ab und fährt und kommt dann um 17:56 Uhr in München an. The train will depart. ट्रेन स्टार्ट होगी, यहाँ से चलेगी 15:44 पे और आपके यहाँ पे 17:56 पे पहुँच जाएगी. So depart and then arrive. The train departs, the train arrives. Fährst du direkt nach Münster oder? Oder steigst du um? Umsteigen. Do you have to change? डायरेक्ट ट्रेन है तुम्हारी म्यून्स्टर तक या बीच में चेंज करना पड़ेगा क्योल में? स्टाइग्स टू इन क्योल. सिटी का नाम है इन है ना. वेस्ट जर्मनी में बड़ा सिटी है. बोन, क्योल. Nein, ich fahre durch und muss nicht. Mama, सीधा आऊंगा. Muss nicht. Okay, दोबारा ना. Muss nicht umsteigen. I do not have to change. Change नहीं करना. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because of modal verb. If modal verb is there, then you need main verb as it is. No conjugation required. modal verb के केस में modal verb को conjugate करते हैं भाई. Ich habe auch einen großen Koffer. Ja bitte. Kein Problem. Wir holen dich mit dem Auto vom Bahnhof ab. Holen ab. आवाज अटक रही है आज मेरी. ओके, अभी बेटर आ रही है. ओके, बताना अगर. ओके, ट्राई करता हूँ ना के. बता देना मुझे. या das ist klar. Noch eine Hausaufgabe. इसके अलावा नहीं का यूरिन की प्रैक्टिस करने को. ओके, यूरिन करना था इसका आपको. बाकी इसमें हमने ये कर लिया सर.
hören. Moment. Haben wir das auch gemacht? Ja, sehr gut. Das haben wir auch gemacht. Das auch gemacht. Okay. Moment, die Lektion haben wir gemacht. Aber dann haben wir hier was. Beruf Übersetzer. Übersetzer und Dolmetscher. There are two words. These words you will see again and again. Übersetzer, translator und Dolmetscher. Dolmetscher is interpreter. Translator उसको बोलते हैं जो लिख के एक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है. हिंदी को जर्मन में, जर्मन को इंग्लिश में, इंग्लिश को जर्मन में हम ट्रांसलेट करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं हम लोग. ठीक है, उसको बोलते हैं यूबरजेट्सर. बट डॉलमेचर एक वर्ड आएगा. डॉलमेचर में हम लोग लिखे हुए को नहीं करते, बोले हुए को ट्रांसलेट करते हैं ऑन द स्पॉट. यहाँ पे प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, जनता समझ ही नहीं रही, तो मैं बीच में हूँ, मैं बता रहा हूँ उनको कि ये क्या बोल रहे हैं. सो दैट इज डॉलमेचर इंस्टीट्यूशन. Beschreiben Sie das Büro. You describe the Büro. Welche Arbeiten macht man dort? Welche Informationen über Frau Bachmann stehen auf der Visitenkarte? Some lady is there and sie heißt Frau Bachmann. Lady Bachmann is there, office is there and some information in visiting card. So we can try maybe पासपोर्ट ब्यूरो. ऑन द स्पॉट आपको सपोज बोलना पड़े, आपने तैयारी नहीं करी, फिर भी ऑन द स्पॉट आपको बोलना पड़े इसके ऑफिस में. कैसा ऑफिस है? समझो बिल्ड बेश्राइबुंग, फोटो मिल गया आपको, सडनली ऑन द स्पॉट से समथिंग. एनीबॉडी? दिस इज द ऑफिस ऑफ मैडम Frau Bachmann. Maybe she is translator because in auf dem Bild ist eine Jungmädchen. Im Bild links liegt ein Drucker. Liegt ein Drucker und eine Tasse liegt auf dem Tisch. Eine Tasse. Okay, sehr gut. Auf dem Bild sehe ich ein Mädchen bzw. eine Frau. Die Frau sitzt im Büro. Das ist Büro von Frau Bachmann. This is the office of Madam Bachmann. Okay, anybody else? Sie können also Visitenkarte auch mal gucken. Wo befindet sich das Büro oder was macht die Frau? Wahrscheinlich ist sie Übersetzerin, Übersetzungsbüro, Sprachservice. Kirti, Sitaram, Nishant. Sie sollten einfach sagen, das ist ein kleines Büro, बहुत बड़ा थोड़ी है. Das ist Büro von Das ist Büro von Frau Verena Bachmann. Übersetzungsbüro und Sprachenservice. Sie führt. Führen का मतलब चलाती है. Übersetzungsbüro und Sprachenservice. Sie kann vielleicht einige Sprachen schon sprechen. हमने पढ़ा नहीं टेक्स्ट, हमको नहीं पता उसके बारे में, बट हम अंदाजा तो लगा सकते हैं. Vielleicht
wahrscheinlich, wahrscheinlich मतलब vielleicht, perhaps. Wahrscheinlich ist sie Übersetzerin. Sie kann vielleicht viele Sprachen sprechen. Sie ist Besitzerin oder sie arbeitet einfach nur bei diesem Büro. Hier in diesem Büro. Das Büro ist klein, aber sieht gut aus. Das Büro ist klein, aber schon. Es gibt einige Bücher, einige, ja, wichtigste Dinge, die man im Büro braucht. Ordner, Ordner का मतलब ये फाइल रखने वाले फाइल्स, Ordner. Es gibt einen Drucker, Telefon und Computer oder Laptop, auch Computer vielleicht. Eine Teetasche kann ich auch sehen, eine Maus. Die Frau ist sehr zufrieden. Sie ist jung und ist glücklich. Das sieht man mindestens. Und das Büro ist, wo ist das Büro? Sie ist blonde Haare. Okay, blonde Haare, ja. Und wo befindet sich das Büro? Wo ist das Büro? Das Büro befindet sich in Jena. Jena liegt also mitten Deutschlands. In the center of Germany. Jena ist eine Stadt, Nähe von Weimar. Oder Weimar ist in der Nähe von Jena. So, das können wir sagen. जो दिख रहा है उतना ही बोला अपन ने, गलत नहीं बोलना, पता नहीं अपन को, जितना पता है जितना लग रहा है वो. नाउ विल सी द ओरिजिनल टेक्स्ट. इसमें देख के हमको लगा ये कहाँ पे है, वो नाम क्या है, मेल आईडी क्या है, टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, man kann ja auch kontaktieren. Jetzt lesen wir ein bisschen. Lesen Sie den Text aus. Berufe aktuell. Berufe, professions, latest professions से आपको कुछ रूबरू करवाते हैं. Und beantworten Sie die Fragen and then we'll answer the questions. Berichten Sie über Verena Bachmann. After reading, you will try. Report. Say something about Verena Bachmann. Was hat sie studiert? What has she studied? Was macht sie jetzt? पढ़ाई क्या करी और अभी आजकल क्या करती है? Geschäftsidee. This is a business idea. Sprachenservice. Language service. Welche Aufträge bearbeitet Frau Bachmanns Sprachenservice? Aufträge. Assignments. कौन सा काम उसका लैंग्वेज सर्विस कर रहा है, उनका ऑफिस कर रहा है, लैंग्वेज सर्विस में क्या क्या दे रहे हैं वो लोग. Haben Sie noch mehr Ideen? Dann können wir hier Berufe aktuell. Verena Bachmann. Sitaram, willst du lesen? Oder Shashank? Ja, Sitaram, du kannst die erste Hälfte. Ja. Verena Bachmann hat in der Schule Russisch und Latein gelernt und dann Englisch. Und danach Spanisch und Germanistik Rostock studiert. Vor 2 Jahren hat sie auch noch ihr Masterstudium in Jena in Deutsch als Fremdsprache abgeschlossen. Zuerst wollte sie als Lehrerin in Integrationskursen für Zigaretten arbeiten, aber bei dem Meisterinstitut bekommt man nur wenige Stunden und verdient wenig
man hat keinen Urlaub und bei Krankheit bekommt man kein Geld. Okay, stopp. Klar bis jetzt, Verena Bachmann hat in der Schule Russisch und Latein gelernt. In the school she has learned Russian und Latin language. Und danach Englisch, Spanisch und Germanistik. And later on Russian और Latin के साथ में उसने English, Spanish and German, Germanistik studiert. Okay, in Rostock. Rostock is the city. Vor 2 Jahren hat sie auch noch ihr Masterstudium in Jena in Deutsch als Fremdsprache abgeschlossen. Abgeschlossen means already completed. Done. Abgeschlossen. Absolviert. एक ही बात है. Zuerst wollte sie als Lehrerin in Integrationskursen für Migrantenarbeiter in Germany इंटीग्रेशन कोर्सेज चलते हैं. जो बाहर से लोग आते हैं उनको जर्मन कल्चर और लैंग्वेज सिखाने के लिए इंटीग्रेशन कोर्सेज चलते हैं. So sie wollte da unterrichten für Migrantenarbeiten, aber bei den meisten Instituten bekommt man nur wenig Stunden. आपको 1-8 घंटे पढ़ाने को मिलता है. Da verdient man nicht gut. Also verdient man wenig. Man hat keinen Urlaub und bei Krankheit bekommt man kein Geld. And bei Krankheit, बीमार हो तो पैसा भी नहीं मिलता. Dann hatte Frau Bachmann eine Geschäftsidee. Viele Menschen arbeiten mit Texten und haben internationale Kontakte. Geschäftsidee. And then she had one business idea. और उसका business idea क्या था? शशांक? Yes, sir. उसने बुक? Dann hatte Frau Bachmann eine Geschäftsidee. Viele Menschen arbeiten mit Texten und haben internationale Kontakte. Sie haben auf Tenniszeit und sprechen Deutsch und fremde Sprachen gar nicht oder nicht besonders. Sie hat einen Sprachenservice gegründet, ihr Angebot. Formelle Briefe schreiben, Übersetzungen in Russisch, Spanisch, Englisch oder Deutsch und Masterarbeiten korrigieren für Studierende an den Universitäten und Hochschulen in Jena, Erfurt und Jena. Es mag ihr Spaß und sie sagt, dass sie dabei sehr viel lernt. Immer mehr kleine Firmen arbeiten jetzt mit Firmen im Ausland zusammen. Sie haben aber keine Mitarbeiter. Fremdsprachenkenntnissen manchmal übersetzt werden. Auf einer Messe oder sie schreibt Information Broschüren für eine Firma auf Englisch. Okay, stopp. Das Design Dann- Ja, dann hatte Frau Bachmann eine Geschäftsidee. Sie got one business idea. Sie got an idea. Viele Menschen arbeiten mit Texten und haben internationale Kontakte. Many people are working with text and they have international contacts with people. Sie haben oft wenig Zeit und sprechen Deutsch und fremde Sprachen gar nicht oder nicht besonders gut. So उसने सोचा कि बहुत सारे लोग विदेश जाते रहते हैं, टेक्स्ट पे उनको काम तो करना पड़ता है, बट दे डोंट नो द नॉलेज. एंड स्पेशली अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो अच्छे से नहीं आती लैंग्वेज. उसने कहा कि उनकी मैं हेल्प करूं. तो जी haben oft wenig Zeit. लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि मेरे को एक बार जर्मनी जाना है जिंदगी में, तो जर्मन क्यों सीखूं. उसके लिए बहुत सारे बिजनेसमैन तो बहुत सारे कंट्रीज में काम करते हैं. सो उसका काम जो भी है छोटा मोटा मेल वेल चेक करने का, उसने सोचा मैं ही कर दिया करूंगी, मेरा ऑफिस कर देगा. जी haben oft wenig Zeit, they don't have time und sprechen Deutsch
und Fremdsprachen gar nicht oder nicht besonders gut. Gar nicht means not at all. Many of them do not speak at all. उनको बिल्कुल भी नहीं आती फॉरेन लैंग्वेज, और आती है तो nicht besonders gut, ढंग की नहीं आती. Sie hat einen Sprachenservice gegründet. Gegründet, established. Sie started with a language service. Ihr Angebot and what she is offering. अपनी लैंग्वेज सर्विस में क्या ऑफर कर रही है वो? फॉर्मल ब्रीफ schreiben, फॉर्मल लेटर्स लिखना, क्योंकि कंपनियों को लिखना पड़ेगा तो फॉर्मल लेटर ही होंगे, ऑफिशियल लेटर्स. फॉर्मल ब्रीफ है. Übersetzungen in Russisch, Spanisch, Englisch oder Deutsch und Masterarbeiten korrigieren. And she started translating Russian, Spanish, English और Deutsch. इनके कोई भी ट्रांसलेशन आते तो वो हेल्प करने लगी लोगों की, पैसे देके मतलब. Und Masterarbeiten korrigieren für Studierenden. Studierende an den Universitäten. Masterarbeiten. Masterarbeiten का मतलब है कि जो भी लोग पीएचडी वगैरह करते हैं तो उनको थीसिस लिखनी पड़ती है. सो बंदा जर्मन में कर रहा है सपोज पीएचडी, तो जर्मन सीखी तो है उसने फॉरेन लैंग्वेज, उसकी तो लैंग्वेज है नहीं, सो देयर में बी मेनी मिस्टेक्स. और पीएचडी वगैरह में मिस्टेक्स तो अलाउ नहीं है भाई. आप एकदम पीएचडी कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो. सो शी स्टार्टेड हेल्पिंग देम इन करेक्टिंग, कि मैं करेक्ट करूंगी आपका मास्टर आर्बाइट जो भी है, थीसिस वगैरह. Korrigieren für Studierende an den Universitäten und Hochschulen in Weimar, Erfurt und Jena. She started in these three cities. ये तीनों सिटी पास में हैं, Weimar, Erfurt und Jena. So she was working then. She started working. University students of university and college students in Weimar, Erfurt und Jena. Es macht ihr Spaß und sie sagt, it was really fun for her because she loves languages. Es macht ihr Spaß, उसको मजा आता है इसमें. Und sie sagt, dass sie dabei sehr viel lernt. Immer mehr kleine Firmen arbeiten jetzt mit Firmen im Ausland zusammen. छोटी से छोटी कंपनी आजकल विदेश की किसी बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट होके काम करना चाहती है. And more companies are working nowadays with companies in foreign countries. Sie haben aber keine Mitarbeiter mit Fremdsprachenkenntnissen, but they don't have worker with foreign languages. छोटी सी कंपनी है, उसमें काम ही लोग 4 करते हैं टोटल, तो सपोज उसमें फॉरेन लैंग्वेज जानने वाला नहीं है, then they approach such language services. Sie haben aber keine Mitarbeiter mit Fremdsprachenkenntnissen. Manchmal übersetzt Verena auf einer Messe oder sie schreibt Informationsbroschüren. वो कभी-कभी इस तरह के कंपनियों के फेयर वगैरह लगते हैं. फॉर एग्जांपल कोई जयपुर की कंपनी है, कोई दिल्ली की कंपनी है, उसको जर्मनी के कहीं पे जाके सिटी में फेयर में पार्टिसिपेट करना है, अपनी दुकान लगानी है, वहाँ पे सामान का प्रचार करना है. जो schreibt Informationsbroschüren, तो ब्रोशर्स उनकी लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे. Für eine Firma auf Englisch. कभी-कभी जर्मन कंपनियों को इंग्लिश में चाहिए ये सब इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो भी तो विदेश में जाती हैं. Das Textdesign macht ein Informatikstudent für sie am Computer. टेक्स्ट डिजाइन वगैरह किसी से करवा लेती है. या ओके, wer will weiter lesen? इसको पढ़ना आगे. Laut und klar. Seit einem Jahr hat Frau Bachmann eine chinesische Mitarbeiterin. Es gibt auch Fragen nach Rumänisch bei Übersetzungen. Dann tauscht Frau Bachmann die Aufträge mit anderen Services. Büros. Es gibt eine Internetseite für den Tausch. Sie findet es richtig, dass sie sich
selbstständig gemacht hat. gemacht hat, aber sie muss viel arbeiten, verdient nicht viel Geld und hat selten Urlaub und nie richtig Feierabend, aber ich bin mein eigener Chef. Sagt sie, das ist der Unterschied. Okay, when people ask her कि भाई कैसा है, कंपनी खुद की चला रही हो आजकल, तो कैसा है डिफरेंस, पहले किसी के काम करती थी, so what she says, seit einem Jahr hat Frau Bachmann eine chinesische Mitarbeiterin. Since 1 year she also has some Chinese worker employee. उसके यहाँ पे कोई चाइनीज काम कर रही है. Es gibt auch Fragen nach Rumänisch oder Lettisch Übersetzungen. Dann tauscht Frau Bachmann die Aufträge mit anderen Servicebüros. Nachfragen मतलब demand. Fragen nach Rumänisch. So 3, 4, 5 languages. Yeah. Translation. So आजकल लेटिन लैंग्वेज, लेटिश लाटविया की लैंग्वेज, छोटा सा कंट्री है लाटविया, उसकी भी डिमांड चल रही है आजकल. वो कह रही है रोमेनियन लैंग्वेज का भी लोग पूछते हैं कि भाई रोमेनियन में ट्रांसलेट कर दोगे क्या. जैसे मेरे से भी लोग कई बार मान लो जर्मन पढ़ाते हैं तो पूछते हैं कि आप चाइनीज भी पढ़ाते हो क्या, क्योंकि उनको लगता है कि फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो राइट, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन के अलावा चाइनीज भी पढ़ाते होंगे, ऐसे पूछ लेते हैं. So es gibt auch Fragen nach Rumänisch und Lettisch, Übersetzungen, Translations. Dann tauscht Frau Bachmann die Aufträge mit anderen Servicebüros. And in this case, वो दूसरे सर्विस ब्यूरो जो है उनसे आपस में रखती है, वो कॉन्ट्रैक्ट रखती है आपस में कि भाई आप हमको इसके दे दिया करो और हम आपको वो दे दिया करेंगे. छोटे ऑफिस आपस में हम चलाते हैं ना. Es gibt eine Internetseite für den Tausch and there is also some internet page, internet website Tausch, की आप आपस में चेंज कर सकते हैं. Sie findet es richtig, dass sie sich selbstständig gemacht hat and she is happy कि उसने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया, किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती, इस बात से बहुत खुश है. Aber sie muss viel arbeiten, but she has to work a lot. Verdient nicht viel Geld, बहुत पैसे भी नहीं कमाती है. Aber sie ist glücklich. Und hat selten Urlaub, हॉलीडेज भी हार्डली मिलती हैं. नहीं richtig Feierabend. richtig Feierabend मतलब 8 घंटे में तो खुद की जॉब कभी पूरी होती नहीं. दूसरे के यहाँ काम करती थी तो 8-9 घंटे मान लो करना पड़ता था. अब उसको 10-10, 12-12 घंटे खुद का काम है तो ज्यादा करती है शायद. Aber ich bin mein eigener Chef, sagt sie, das ist der Unterschied. I am my own boss, मैं खुद की बॉस हूँ और यही डिफरेंस है. She is happy. Das ist der Unterschied. This is the difference. Difference यहाँ है. So, Berichten Sie über Verena Bachmann. कौन है ये लेडी? जानेंगे etwas. What is she by profession? Verena Bachmann ist Geschäftsfrau und Übersetzerin. Business lady and she is translator. Okay, was hat sie studiert? Was macht sie jetzt? Was hat sie studiert? पढ़ाई क्या की है उसने और आजकल क्या करती है? Sie hat in der Schule Russisch und Latein gelernt. Sie hat im Büro gearbeitet. Und was macht sie jetzt? Sie arbeitet im Büro. Also jetzt hat sie eigenes Büro. Sie hat jetzt einen Sprachservice. Now she has a language service. Okay? So was macht sie jetzt? Jetzt führt sie ein eigenes Büro. Geschäftsstelle Sprachenservice. What do you understand? What is a language service? What they do?
What is language service? What these people do? Sie übersetzen, sie machen Übersetzungen, okay? Und was noch? Was noch? Okay? Mhm. Spanish, English. Alle können Sprache übersetzen. Ja. Also sie übersetzen, sie machen Übersetzungen oder sie schreiben formelle E-Mails, na? Hier. Formelle Briefe schreiben, Übersetzungen, zum Beispiel in Russisch, Spanisch, Englisch oder Deutsch. Das machen sie. Oder manchmal übersetzt Verena auf einer Mesche oder sie schreibt Informationsbroschüren für eine Firma auf Englisch. Also das sind die Aufgaben dann. These are the tasks. Okay. richtig, noch mehr Ideen, इसके अलावा और क्या करा जा सकता है, इसके अलावा कोई आइडिया है आपके पास? Last text design gemacht. ओके, या स्प्राखन सर्विस, और क्या कर सकते हैं लैंग्वेज सर्विस वाले? Dann bekomme ich auch Ideen, na? Klar. So. डोलमेत्सन का काम कर सकते हैं. डोलमेत्सन और यूबरजेत्सन का बताया आपको मैंने. यूबरजेत्सन में आदमी को एक टाइम रहता है, वो जैसे मान लो कोई पेपर आ गया आपके पास, कोई बुक आ गई, उसको ट्रांसलेट करके देना है, तो आपके पास एक टाइम लिमिट है, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में आपको देना है. सो यू हैव टाइम एंड देन kannst du das also vielleicht mit Hilfe von einem Wörterbuch, Dictionary की हेल्प ले सकते हो, vielleicht irgendwie von Freunden, aber Dolmetschen, फर्स्ट की ब्लड दिख रही ब्लड दिख रही है, है सर. बाकी लोगों को भी ब्लड दिख रही है क्या? स्क्रीन नो सर. सही दिख रही है? ओके. अभी सही आ रही है, ब्लड दिख रही है. कभी कभी अभी वो सही हो रही नेट का इश्यू रहता होगा, कभी कभी नेट का इश्यू रहने से ऐसा होता है. सो डॉलमेत्सर और यूबरजेत्सन का फर्क बता रहा था मैं आपको. यूबरजेत्सन बेडेटेड ट्रांसलेट करना, डॉलमेत्सन का मतलब ऑन द स्पॉट आपको बोल के ट्रांसलेट करना, दुभाषी का काम. Du sagst was und dann ich sage gleich was du gesagt hast. Hier gibt es auch zum Beispiel, spricht mit jemandem. Ja. स्पेलिंग क्या है? Dolmetschen, Dol, ich schreibe. Should be like okay. Dolmetschen, D-S-C-H-E-N. Dolmetscher. Ein Gast besucht Ihr Institut. Spricht Deutsch. Ihr Institutleiter spricht kein Deutsch. Suppose some guest is visiting your institute and he speaks German. Ihr Institutleiter, आपका जो इंस्टीट्यूट का जो लाइटर है, लाइटर का मतलब है इंस्टीट्यूट का जो मालिक है या फिर जो चला रहा है इंस्टीट्यूट को, spricht kein Deutsch, उसको जर्मन आती ही नहीं और जर्मन विजिट कर रहा है इंस्टीट्यूट. जी übersetzen im Gespräch, जो im Gespräch übersetzen, आप बोल के जो ट्रांसलेट करते हो ना, that is Dolmetschen. This is called Dolmetschen. Wie viele Studenten gibt es? तो पूछ रहा how many students are there?
Wie viele Lehrerinnen hat die Schule? Welche Kurse gibt es? So these are the questions, for example. जो जर्मन आके पूछ रहा है, आपको ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट हैं, वो तो वो जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उसी को पता होगा ना. फॉर एग्जाम्पल ई लैंग्वेज स्टूडियो में आज सपोज 160 बच्चे पढ़ रहे हैं जर्मन, फॉर एग्जाम्पल. अब ये बात तो मुझे ही पता है, बाकी लोगों को दिखता है कि भाई बहुत सारे बच्चे चल रहे हैं A1 to C1, बट कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, ये तो पता नहीं रहता. सो बताना तो ये तो उसको खुद को ही है, बट उसको तो बोलने ही नहीं आती जर्मन. सो वो इससे पूछेगा और ये बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी. सो das ist dann Dolmetschen. मे बी आप इसका ट्राई कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस बना के घर पे आपको आराम से करना पड़ेगा, बट ट्राई फिर यहाँ पे बोल सकते हो. सो दिस इज सिचुएशन 1. Dann Situation 2. Ein Bekannter aus Deutschland besucht Ihre Familie. Maybe some German is visiting your family. Your father speaks kein Deutsch. Your father is not speaking, doesn't speak German. जी übersetzen im Gespräch. So आपको आती है, आप बताओगे पापा ये क्या पूछ रहे हैं, बताओ इनको कड़ी पकौड़े कैसे बनाते हैं, मे बी वॉट एवर. सो आप बताओगे, फिर आपको पकौड़े बनाने नहीं आते, वो तो आते पापा को ही है. Aber dann Sie brauchen Hilfe. और Sie reden über das Wetter, about the weather, wie groß ist die Stadt, how big is the city, was kann man hier machen, welche Sehenswürdigkeiten gibt es da, wer arbeitet wo, घर में कौन कहाँ पे काम करता है. तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप लिख के कोशिश करना. ये सिचुएशंस क्वेश्चन समझ में आ गए ना. और Situation 3. Sie gehen mit einer Freundin in Deutschland zum Arzt. With a friend you are going to doctor in Germany. Ihre Freundin spricht kein Deutsch. आपकी फ्रेंड आपकी बात जर्मन नहीं बोलती. जी übersetzen im Gespräch. Was fehlt Ihnen? आपको प्रॉब्लम क्या है? अब डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा ना दिक्कत. आप ये तो कह नहीं सकते तुम ही बताओ डॉक्टर, तुम ही हो, हैं? तुम बताओ मुझे क्या हुआ है, तो आपको भी बताना पड़ेगा कोई पेट में दर्द है क्या है. जी गए ना. सो was fehlt Ihnen? What's the problem? What's the matter? क्या हुआ आपको? What is missing? Wo haben Sie Schmerzen? Where you have pain? दर्द कहाँ है? Haben Sie auch Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Schmerzen सब में आएगा. Kopfschmerzen. Schmerzen is pain. Kopfschmerzen is headache. Halsschmerzen is neck pain. Und Rückenschmerzen back pain. So प्रॉब्लम है कहाँ, कौन सी तो दवाई. सो ये क्वेश्चंस कुछ बना के इसके आंसर आप ट्राई कर सकते हो. ड्राइव जस्टिस 63 पे आप ट्राई कर सकते हो. ओके, एक चीज अपन यहाँ करेंगे, एक चीज आप घर पे करोगे, ठीक है. ये वाला यहाँ करते हैं एंड इसमें 2 है. ये वाला आप घर से ट्रांसलेट करके लाओगे. सेकंड वन, English hilft beim Deutschlernen. Schluss mit English. Okay, this one is your homework. You will translate it. And this one, do here. Europas Tradition. Am Anfang Griechisch. European Tradition. In Europa spricht man viele Sprachen. यूरोप में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है. पूरे यूरोप में कुल मिला के इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जितनी भारत में है ना. 50 देशों में लगभग इतनी लैंग्वेज तो हैं, अपने यहाँ पे हैं जितनी, क्योंकि अपने भी बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस चलती हैं. सो Europas Tradition, am Anfang Griechisch. In the beginning there was Griechisch, Greek language. In the beginning. So लैंग्वेज तो बहुत सारी थी, बट ग्रीक का राज था. लैंग्वेज का भी एक टाइम होता है ना उस टाइम पे. हमारे यहाँ पे कभी संस्कृत का राज था, संस्कृत का लैंग्वेज थी, बहुत रेस्पेक्ट था, दबदबा था. अभी धीरे धीरे कम हुआ संस्कृत का, बट अभी भी कुछ जैसे मंत्रों में और उसमें तो संस्कृत ही चलती है. So Europa
ist ein Kontinent mit vielen Sprachen. Europe is a continent with many languages. Mit vielen Sprachen, with many languages. Vor 2500 Jahren war Griechisch die Sprache der Literatur und der Wissenschaft. 2500 years पहले यूरोप में ग्रीक लैंग्वेज जो थी वो थी लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस। जो भी कुछ साइंस थी उस टाइम पे लिटरेचर एंड साइंस की लैंग्वेज ग्रीक थी। अब 2500 साल पुरानी बात क्यों कर रहे हैं, 5000 पुरानी क्यों नहीं कर रहे, 10,000 साल पुरानी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो है ही इतने पुरानी, उनकी हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है। 2500 साल पुरानी, 2600 साल पुरानी इतनी हिस्ट्री है यूरोप की। अपने यहाँ पे 5000 से पुराना साल का इतिहास मिलता है महाभारत वगैरह का मिला के। सो damals Griechisch die Sprache der Literatur und der Wissenschaft। ये der का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे कौन सी ग्रामर काम में आ रही है? रिलेटिव प्रोनाउन ये तो वो आ गया ना रिफ्लेक्सिव। सीताराम, निशांत, कीर्ति, शशांक, व्हाट इज दिस देयर? ये गेनेटिव है या क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनोमन हो गया। ने ये हुआ गेनेटिव। गेनेटिव में मीनिंग निकलता है कि ऑफ, इसमें ऑफ का मीनिंग निकलता है। इसकी टेबल याद नहीं है आपको? गेनेटिव क्या होता है? आइडिया है या नहीं है? ऑफ द है ना? हाँ, टेबल एक बार फिर लिखवा देता हूं। Der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, dem प्लस n। कल आपको रिफ्लेक्सिव की वापस रिवीजन कराऊंगा थोड़ी सी, डोंट वरी। This one, the last one is genitive. This is nominative, accusative, dative. This is genitive. Yes. Nominative, accusative, dative. इसका पूरे का मतलब होता है of. And genitive का होता है of the. इसमें s या es, s और es लिखते कैसे हैं? Des, there, des, there। Inus, manus। सो मैस्कुलिन और न्यूट्रल में अगर गेनेटिव यूज करो तो नाउन में एस या एस भी लगता है। जैसे मैं बोलूं ये पेन जो है इंस्टीट्यूट का है भाई, इंस्टीट्यूट का मतलब ऑफ द इंस्टीट्यूट। द पेन ऑफ द इंस्टीट्यूट। देयर कूली दास इंस्टीट्यूट होता है। देयर कूली डेस इंस्टीट्यूट्स। लास्ट में एस लगेगा इंस्टीट्यूट में, मतलब ये हमको सोचना पड़ता है कि एस लगेगा या ईएस लगेगा। हमने इसका रूल निकाला कि ईएस तो तब लगेगा जब कोई वर्ड छोटा हो। छोटा वर्ड, छोटा वर्ड मतलब सिंगल सिलेबिक, वन सिलेबिक, राइट। जैसे किंड, हुंड, मन, किंड, हुंड, मन। सो इनमें तो लगेगा ईएस इन केसेस में,
और जब ये ईएस लगेगा तो ये नाउन में लगेगा। जैसे अब इंस्टीट्यूट में ऐसी क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगल सिलेबल वर्ड नहीं है, बड़ा है। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट एक बार में नहीं बोल रहा ना, लेकिन किंट, हुंट, मन, वन गो में, वन शॉट में बोला जाता है। सो उसमें ईएस लगता है जब वन शॉट में बोला जाता है। या फिर वर्ड की एंडिंग एस साउंड से हो, एस डबल एस एच जेड एक्स, इस तरह से आपको बताया होगा कि वर्ड की एंडिंग इससे हो रही हो तो ईएस। तो इंस्टीट्यूट में तो ऐसी लगा यस, क्योंकि इंस्टीट्यूट का आर्टिकल दास इंस्टीट्यूट है और ये एस लग गया, छोटा वर्ड नहीं है। और यहां पे क्या था वो, डेयर लिटरेटूर, एस तो लगा ही नहीं क्योंकि दी लिटरेटूर होता है। और विशनशाफ्ट भी दी विशनशाफ्ट है तो दी का भी डेयर ही हो गया। तो ऑफ ना साइंस मीन्स इन ओल्डन टाइम फॉर जो 25 Jahren 2500 साल पहले ग्रीक लैंग्वेज का ग्रीक कहां चलती थी, रोम में, यूरोप में, ग्रीस ना, ग्रीशियन लैंड बोलते हैं ना, ग्रीशियन लैंड। सो फिर एक लैंग्वेज का राज आता है तो बाकी लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, पॉलिटिकली डिपेंड करता है। Europa ist ein Kontinent mit vielen Sprachen. Europe is a continent with many languages. Vor 25 Jahren war Griechisch die Sprache. Greek language was the language of the literature and of the science. ये गेनेटिव है यहाँ पे। ग्रीक लैंग्वेज थी उस टाइम पे। अपने यहाँ पे एक बार कहा जाता था कि यहाँ पे पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, फारसी लैंग्वेज का ही राज आ गया यहाँ पे, हद हो गई। हाँ उस टाइम पे आए थे भाई उधर से लोग, ईरान साइड से, शायद वही चलती है ना। सो यहाँ पे जो भी फारसी जाने उसकी कीमत हो गई, वो राजा से बात करेगा या फिर इस तरह के सरकार से कम्युनिकेट कर सकता है। तो बोले फारसी पढ़ लो, पढ़ा लिखा है तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता लैंग्वेज का, फारसी है कि क्या। तो कहावतें भी फिर ऐसे ही आती हैं एक्चुअली, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। वाह उल्टा बोल रहा हूँ, यस, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सो ऐसे ही वो फिर रोम का जब राज था तो बोलते थे रोम wurde nicht an einem Tag erbaut, एक दिन में रोम नहीं बना। alle Wege führen nach Rom, सारे रास्ते रोम की तरफ जाते हैं, ये कहावतें हैं जर्मन में ना। सो ये लैंग्वेज आती है तो उसके साथ कल्चर भी आता है, कहावतें मुहावरे सब फेमस हो जाता है। सो der Anfang der Kultur in modernen Europa liegt in antiken Griechenland, ये कल्चर वगैरह सब स्टार्ट हुआ यूरोप में। ये एंटीक पुराने टाइम का जो ग्रीशियन लैंड था वहां से हुआ। Danach war Latein mehr als 1000 Jahre lang die Lingua Franca in der Wissenschaft, and after that 4000 years, 1000 साल तक लैटिन लैंग्वेज लिंगुआ फ्रांका, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोली जाने वाली कॉमन भाषा। जैसे आजकल इंग्लिश लिंगुआ फ्रांका बनी हुई है, हिंदी है लेकिन इंग्लिश लिंगुआ फ्रांका है जो जोड़ती है साउथ को नॉर्थ से अपने यहाँ पे। सो लिंगुआ फ्रांका का मतलब है पढ़े लिखे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए काम में आने वाली भाषा। 4000 years, 1000 साल तक लैटिन का चला भाई। In der Wissenschaft, साइंस में खास तौर पे, alle Theologen und Philosophen haben auf Lateinisch geschrieben, and that time all the theologists, philosophers, they have written in Latin language. In der Medizin ist Latein heute noch die Fachsprache. मेडिसिन के फील्ड में तो आजकल भी लैटिन के बहुत लैंग्वेज, बहुत वर्ड वही चलते हैं अभी भी। geschrieben in der Medizin. Heute noch means आज भी, ये काम आज ही करना है। Das machen Sie heute noch, ये एक्सप्रेशन है आज की आज। सो आज भी निकलता है इसका मतलब, और आज की आज भी निकलता है। The
Fachsprache, यही है main language. Die meisten Schülerinnen und Schüler, most of the school-going students, haben damals Latein in der Schule gelernt. That time, most of the students language अपने स्कूल में पढ़ने लग गए थे. In der Schule gelernt. Während der Kolonialzeit sind viele europäische Sprachen ins Ausland ausgewandert. Kolonialzeit. Koloni उपनिवेश यस जिसमें ये फ्रेंच लोगों ने जर्मन्स ने भी थोड़ा सा कई जगह पे किया था, नामीबिया वगैरह में, अफ्रीका वगैरह में, कहीं कहीं पे मेनली पुर्तगीज इंग्लिश जो ना फ्रेंच इंग्लैंड वाले पुर्तगाल वाले इन्होंने जगह जगह अपनी कॉलोनी बसा ली थी. So that time in Kolonialzeit sind viele europäische Sprachen im Ausland ausgewandert. Auswandern मतलब विदेश चली गई इन लोगों के साथ. Spanish nach Südamerika, Spanish language साउथ अमेरिका गई, उसी टाइम गई. Portugiesisch nach Südamerika and Portugies भी गई Südamerika und nach Afrika and Portugies साउथ अमेरिका के साथ अफ्रीका भी गई. English nach Afrika, Asien, Australien und Amerika. इंग्लिश तो सारे महाद्वीपों में चली गई क्योंकि खुद के तो वहां थी, यूरोप में तो, इंग्लैंड में तो थी, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सब जगह इंग्लिश की लैंग्वेज हो गई. Seit dem 17. Jahrhundert war Französisch and then from 17th century 17वीं शताब्दी से French became the Sprache der, देखो यहाँ भी गेनेटिव है, this language became the Sprache der Aristokratie. Aristokratie का मतलब है कि जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स, elite क्लास की लैंग्वेज बन गई है. Und nicht nur der Aristokratie, aber der Kultur und der Politik in Europa. French language became the language of aristocracy, language of politics and language of culture. ऐसे देखा जाने लगा उसको कि भाई ये लोग बहुत कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं. ऐसे फ्रांसीसिश nicht English, ये कह रहे हैं कि इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, फ्रेंच की कर रहे हैं. और फ्रांसीसिश जो है war für die meisten Schüler in Europa mehr als 200 Jahre lang die erste Fremdsprache. Heute ist Französisch noch eine offizielle Sprache der EU. So for next 200 years French language was so important and heute ist Französisch noch eine offizielle. And that time most of the students in Europe started learning French. जिसमें जॉब मिलता है वही तो करना शुरू कर देते हैं. अंग्रेजों ने क्या किया, जिसको इंग्लिश आती है भाई वो ये रुपए लो, इतने अच्छे मिलते हैं. लोगों ने कहा यार रुपए मिल रहे हैं, नौकरी मिल रही है, सीखो. They started. So heute ist Französisch noch eine offizielle Sprache der EU. And today also French is one of the official language of European Union und neben English die wichtigste Arbeitssprache. And near English, it is the most important working language. Der Europäischen Kommission in Brussels. Brussels is actually headquarter of European Union. So there, this is the most important language after English. So French का है तर्जबा कुछ मामलों में. In Ost und in Mitteleuropa war Russisch bis vor 20 Jahren die erste Fremdsprache. If we talk about Russian language, so till last 20 years, 20 साल पहले तक जो रशियन लैंग्वेज थी वो वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप में, ओस्ट और मिडिल यूरोपा, मिडिल यूरोप में एंड ईस्ट यूरोप में ये रशियन लैंग्वेज को भी मानते थे. क्योंकि रशिया टूटा है ना, उससे पहले तक रशिया के 13 टुकड़े हो गए थे शायद ना, 13 हुए थे, कितने हुए थे. तो इतना बड़ा रशिया था तो उसका दबदबा था भाई, वो सुपर पावर अमेरिका को टक्कर देता था.
फिर टुकड़े हो गए तो उसका कोई नाम लेवा नहीं है अभी खास, बट टिल देन ओस्ट und Mitteleuropa, ईस्ट यूरोप में और मिडिल यूरोप में Russland war auch wichtig. In Westeuropa Englisch and Westeurope में English. Heute lernen die Schüler in ganz Europa meistens Englisch als erste Fremdsprache. And today in whole Europe people are taking English as first foreign language. हमारे यहाँ भी इंग्लिश को ही फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं, फिर बाकी लैंग्वेज का नंबर आता है. सो टुडे इन यूरोप इंग्लिश दे आर रीडिंग, दे आर लर्निंग एज फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज als zweite Fremdsprache meistens Deutsch. ये कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश के बाद तो जर्मन का नंबर आता है, ऐसे कह रहे हैं लोग. Aber auch Französisch oder Spanish and but also French and Spanish. Junge Menschen in Süd- und Südosteuropa lernen heute mehr Deutsch als früher. Young people are learning more in South and Southeast Europe. They are learning more German than earlier. German young लोग बहुत सीख रहे हैं. Die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und Schweiz sind ein attraktiver Arbeitsmarkt im geografischen Zentrum Europas. यूरोप के जियोग्राफी में आप देखो तो जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, दे आर वेरी अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस एंड पीपल कम एंड वर्क हियर एंड मेक देयर करियर. सो इट वाज अबाउट ट्रेडिशन, लैंग्वेज ट्रेडिशन ऑफ यूरोप. यूरोप में लोग लैंग्वेज कितना पढ़ रहे हैं, कैसे, कौन सी लैंग्वेज का कब तक बोलबाला रहा.